Good morning, dear students. On page number 106, exercise 5.2. Question number 4. Read in your textbook. Which term of AP 3, 8, 13, 18 is 78? We have given an AP. The terms of the APs are 3, 8, 13, 18 dash dash is last term is 78. So here are given that A is 3, D is 8 minus 3, 5, and the nth term. Any term, nth term, suppose as 78, it is an nth term. So, an is equal to, the formula is an is equal to a plus n minus 1 d. Now, value of an is 78 is equal to value of a is 3 plus we don't have the value of n, because we have to find which term means value, we have to find the value of n. Minus 1 bracket value of d is 5. Then 78 is equal to 3 plus 5 into n, 5n minus 5 1 ja 5. Now 78 is equal to 5n and minus 5 plus 3 is minus 2. Now 5n is equal to 78 plus 2, then 5n is equal to 80 and n is equal to 80 upon 5 and value of n is 16. Hence the 16th term of this AP is 78, यानी इस AP का 16th जो term है वो 78 है. Now question number 5. Read in your textbook, dear students. Find the number of terms in each of the following APs. हमको APs given है, उसमें हमको number of terms बताना है. Second of this, second AP is 18, 15 1 by 2, 13 dash dash and the last term is minus 47. We have to find number of terms. This is like the question number 4. First A is 18 and difference D is 15 1 by 2 minus 18. Then solve this. 15 2 ja 32 plus 1 30, 15 2 ja 30, 30 plus 1 31 upon 2 minus 18. Now 31 and the 18 2 ja 36. Now its value is minus 5 by 2. Then the common difference D is minus 5 by 2. Let there are n terms in this AP. हम ऐसा सपोज करते हैं कि इसमें n टर्म्स है, therefore an is equal to minus 47. फिफ्थ क्वेश्चन सेम आपका क्वेश्चन 4 जैसा ही है. Now value of an is minus 47 is equal to 18 plus n minus 1 and the value of d is minus 5 by 2. Then minus 47 and plus 18 goes to transpose to left hand side, then becomes minus 18 is equal to, अब इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5 अपॉन 2 n plus minus minus plus and 5 upon 2. Now the sum of minus 47 and minus 18 is minus 65, because minus minus plus but the sign remain minus negative, and the LCM of 2 and 2 is 2, then 5n plus 5. Now the cross multiply of 65 into 2 is minus 130 is equal to minus 5n plus 5. Now minus 5n is equal to minus 130 and plus 5 transport to the other side of the equal, then minus 5n minus 5 and minus 5n is equal to minus 135. Now n is equal to minus minus cut and 135 upon 5, then n is equal to 27. Therefore in this given AP has 27 terms in it. हमको जो AP दी हुई है इसमें 27 terms है. Okay, now the next question is 7. Question number 7. Read in your textbook. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. हमको AP का 31 टर्म्स बताना है जिसका 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 72 है. तो हमको A11 गिवन है 38 और A16 गिवन है 73. तो हम an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी फॉर्मूला लेते हैं. देन an अगर 38 लेते हैं तो a प्लस n की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 11 माइनस 1 डी. देन 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 डी. देन a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38. इक्वेशन 1. नाउ A16 इज इक्वल टू 73. तो A16 होगा आपका a प्लस 16 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 73. नाउ 73 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 15 डी. देन a प्लस 15 डी इज 73. सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2. हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो a प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73
अपॉन ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन को, नीचे वाली इक्वेशन को, तो हम इधर नेगेटिव के साइंस लगा देंगे क्योंकि इसके साइन बदल जाएंगे सब्ट्रैक्शन की वजह से। ये जो क्वेश्चन अब आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में चला गया है, तो ए से ए कट हो जाएगा माइनस ए, और प्लस 15d माइनस 10d आप करेंगे तो यू हैव फाइंड प्लस 5 फाउंड 5d इज इक्वल टू 73. The sum of 73 and minus 38 is plus 35, and the value of d is 35 upon cross multiply से 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, and the value of d is 7. अभी हमको कॉमन डिफरेंस d 7 मिला है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 अभी हमको 32 सेकेंड टर्म बताना बाकी है. देन इक्वेशन 1 इज a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, देन a प्लस 10 and the value of d is 7 is equal to 38. Now a plus 70 is equal to 38. Now a is equal to 38 plus 70 goes to right hand side and becomes negative 70, and a is equal to minus 32. Now we have to find a 30 first. 31 टर्म हमको बताना है, तो a 31 is equal to a plus n minus 1d where value of n is 31. Then put the values of a is minus 32 plus the value of n is 31 minus 1 bracket minus plus 7. Now a31 is equal to minus 32 plus 31 minus 1 is 30 bracket 7. Now a31 is equal to minus 32 plus 7 3 are 21 and 0. Then a31 is 178. Means the 31st term of the given AP is 178. Now the next question is our 10. Dear students, question number 10, read in your textbook. The 70th term of an AP is exists its 10th term by 7. Find the common difference. यानी जो 70th टर्म है AP की वो उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो इक्वेशन बनेगी A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7. देन A17 इज इक्वल टू A प्लस A17 की वैल्यू क्या होगी A प्लस 16d एंड A10 की वैल्यू होगी A प्लस 9d. फॉर्मूले की वजह से an इज इक्वल टू n माइनस 1d, क्योंकि n में से एक माइनस हो जाता है. देन 17 के लिए आएगा 16d और A10 टर्म के लिए आएगा 9d. एज पर द क्वेश्चन A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7. नाउ A प्लस 16d माइनस A प्लस 9d, पुट द वैल्यूज फ्रॉम हियर इज इक्वल टू 7. देन A प्लस 16d माइनस A माइनस 9d इज इक्वल टू 7. देन A से A कट हो जाएगा और 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7. Then 7d is equal to 7 and d is equal to 7 by 7 is equal to 1. Therefore the common difference of the AP is therefore the common difference of this given AP d is 1. Now dear students, you have to be done in homework question number 4 to 10 in today's homework. Today's your homework is question number 4 to question number 10. If you have any doubt, you can ask me in my personal WhatsApp number if in any question you have any doubt. Okay, thank you.